Today we will discuss about the reactions of phenol. In last lecture we studied the reactions of alcohol. Now we see the reaction of phenol. Phenol gives electrophilic substitution reaction. Phenol देता है electrophilic substitution reaction, means the reaction in which hydrogen atom of benzene ring is substituted by electrophile. इस रिएक्शन में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होता है बाय इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स द स्पेसिस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज और दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का निकलता है और उसके जगह पर अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सो हियर OH ग्रुप ऑफ फेनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. यहाँ पर OH ग्रुप जो है इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, देयरफॉर इट डायरेक्ट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यानी OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट करता है. तो सब में पहले हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले वो है हेलोजिनेशन ऑफ फेनॉल. सो हियर इन हेलोजिनेशन वी सी द ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल, मीन्स हियर phenol is react with bromine or aqueous bromine. This one is phenol. It react with bromine in water, means aqueous solution of bromine. Here there are 3 bromine are attached in the benzene ring at position of 2, 4 and 6. So the product is 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल. यहाँ पर हम देख रहे कि जब फेनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर, इट गिव्स 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल. यहाँ पर ये जो है OH ग्रुप को कार्बन को 1 नंबर दे रहे, इट इज 2, 3, 4, 5 and 6. So the position of bromine is 2, 4, 6 and the byproduct is 3 HBr. This one is the first reaction, that is halogenation. Here the second reaction is again halogenation, but here phenol is react with bromine in presence of CS2 or CCl4. You take either CS2 or CCl4. So here we get the 2 products. One is orthobromophenol and the second one is parabromophenol. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ब्रोमीन फेनॉल के साथ रिएक्ट होता है in presence of CS2 or CCl4, then here we get the 2 products. One is orthobromophenol or its another name is 2-bromophenol, and here there is para-bromophenol or 4-bromophenol. So here we get the 2 products. From these 2 products, the major one is the para product. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेजर है, जो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है वो है para-bromophenol, and this one is the minor product, that is ortho-bromophenol. So here we see when bromine is react with phenol in presence of CS2, it gives 2 products. In first product, the substitution occurs at ortho position. In second product, the substitution occurs at para position. And here, the major product is para-bromophenol. So in this way, we see the 2 reaction in halogenation. One is when phenol is react with aqueous bromine, it gives 2, 4, 6 tri-bromophenol. Here 3 bromine attached in a same benzene ring, and while bromine is react with phenol in presence of CS2, it gives 2 products, orthobromophenol and parabromophenol, and here the parabromophenol is the major product. So it is the electrophilic substitution reaction. The second reaction of phenol is nitration of phenol. In nitration there are also 2 reactions. The first reaction is when phenol is react with dilute nitric acid. पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर फेनॉल जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, नाइट्रिक एसिड HNO3,
Here we get the two product. In first product, the nitro group is attached to ortho position of OH group, and in second product, the nitro group is attached to the para position of OH group, and the byproduct is H2O. So here this one is ortho nitro phenol, and this one is para nitro phenol. Here also this product is द मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मेजर है या ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इट इज़ द माइनर प्रोडक्ट. सो इट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन, दैट इज नाइट्रेशन by using dilute nitric acid. Here phenol is react with dilute nitric acid. It gives two products, orthonitrophenol and paranitrophenol, and the byproduct is water. Here paranitrophenol is the major product. The second reaction of nitration of phenol is reaction with concentrated nitric acid. Second reaction में हम phenol की reaction करने वाले हैं concentrated नाइट्रिक एसिड के साथ, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर. यहाँ पर याद रखना है, फेनॉल जब कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो प्रेजेंस लेना है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों के मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. सो हियर फेनॉल इज रिएक्ट विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर. Here 3 nitro group is introduced in the ring. So here we take 3 concentrated nitric acid. The position of nitro group is 2, 4, 6. This one is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So its name is 2, 4, 6 tri nitrophenol. And the byproduct is 3H2O. So this is also called picric acid. The another name of this 2,4,6 dinitrophenol is the picric acid. So it is the second reaction of nitration. So here phenol is react with concentrated nitric acid. In presence of concentrated sulfuric acid, we get 2,4,6 trinitrophenol. It is also called the picric acid. So here we completing the nitration of phenol. The third important reaction of phenol is the sulfonation of phenol. In sulfonation reaction, the phenol is react with the concentrated nitric acid. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सल्फोनेशन में फेनॉल जो है वो रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर concentrated sulfuric acids. Therefore its name is sulfonation. Here this reaction is takes place at room temperature. यहाँ पर room temperature पर reaction है. So here we get the ortho product, means here sulfonic group is attached to the ortho position. यहाँ पर हम देख रहे फेनॉल के ortho position पर यहाँ पर अटैच हो रहा है सल्फोनिक ग्रुप, और इसे कहते हैं ऑर्थोफेनॉल sulfonic acid. The name of compound is orthophenol sulfonic acid. तो यहाँ समझ देख रहे हैं आप सब कि फेनॉल जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है इन एट रूम टेम्परेचर, हियर द सल्फोनिक ग्रुप दैट इज SO3 group, SO3H group is attached to ortho position of OH, means it is orthophenol sulfonic acid, and the byproduct is water. Same reaction is takes place at high temperature. यही रिएक्शन को हमें हाई टेम्परेचर पर करना है, या 100 डिग्री सेल्सियस, या उसको हम 373 केल्विन कहेंगे. सो हियर फेनॉल इज रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 in at 373 Kelvin, or it is also 100 degree Celsius or high temperature. Here the product is different. Here the product is para product, or sulfonic group, means SO3H group is attached to para position. So it is paraphenol
सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो है पैराफेनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन सेम ही है, दोनों में फेनॉल की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन एक रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो रही है और दूसरी रिएक्शन जो है वो 373 या 100 डिग्री सेल्सियस या हाई टेम्परेचर पर हो रही है। तो जब रूम टेम्परेचर पर ये सल्फोनेशन की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट जो है ऑर्थोफेनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है, और सेम रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर होती है तो प्रोडक्ट पैराफेनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक ग्रुप। हियर हाइड्रोजन एटम इज, इट इज मोस्ट important, here hydrogen atom is replaced by sulfonic group, that is SO3H group. This group is called sulfonic group. So here hydrogen atom is replaced by sulfonic group, so it is called sulfonation of phenol. Here at room temperature we get orthophenol sulfonic acid, and at high temperature we get paraphenol sulfonic acid. So these are the three important reaction. The fourth one is, the name is given to that reaction, that is Remer-Timon reaction. In this reaction, first of all the phenol is react with chloroform. यहाँ पर हम देखेंगे कि फेनॉल जो है वो रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, that is CHCl3, and react with aqueous NaOH. So here the first product is the hydrogen atom of phenol is replaced by sodium, and at ortho position CHCl2 group is attached. It is most important reaction. Here phenol is react with chloroform CHCl3 and aqueous NaOH. So first of all this hydrogen atom of phenol is replaced by sodium, and here CHCl2 group is attached to ortho position of phenolic group. Then it again react with NaOH, फिर से ये रिएक्ट होता है NaOH के साथ. So due to which both chlorine atom attached to carbon, they are replaced by OH, and here there is a elimination of water molecule, and the product is OH, ONA, and then here we get, by elimination of water molecule we get aldehyde group. Then after this hydration in presence of acid or hydrolysis in presence of acid, here again ONA is converted into OH, and here there is a CHO group. So in this reaction at the ortho position of phenol aldehyde group is introduced. याद रखना है तुम्हें, in Riemann-Timon reaction the aldehyde group is introduced in the ring. यहाँ पर aldehyde group ring में introduce हो रहा है, वो OH group के ortho position पर, and the name of this compound is salicylaldehyde. The name of compound is salicylaldehyde. So see, this reaction is very important reaction. Here phenol is first react with chloroform and NaOH, due to which the hydrogen atom of OH group is replaced by sodium, and its ortho position CHCl2 group is attached. It again react with NaOH, then both chlorine atom are replaced by OH. It eliminate the water molecule, and due to which this group is converted into aldehyde. We again carried out the hydrolysis in presence of acid, due to which this ONA group is again converted into OH group. So in this way, in this reaction we introduce CHO group at the ortho position of OH group, and this compound is called salicylaldehyde. In the same reaction, if we use CCl4 in a place of chloroform, अगर हम अभी के पीछे जो रिएक्शन पढ़े हम, उस रिएक्शन में अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर अगर हम फेनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो मिलता है सैलिसिलिक एसिड
मतलब अल्डिहाइड के जगह पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एसिड ग्रुप, तो ये रिएक्शन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही फेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिएक्ट विथ CCl4 and continue it react with aqueous NaOH. So first the hydrogen atom of phenol or OH group is replaced by sodium, and here there is CCl3 group is attached to benzene ring at the ortho position. Again it react with NaOH. So all the three chlorine are replaced by OH group. तीनों भी क्लोरीन जो है वो OH में यहाँ पर रिप्लेस होते हैं। देन हियर देर इज़ लॉस ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, और यहाँ पर बाकी रहता है COOH ग्रुप एंड ONA. दिस कंपाउंड इज कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो हियर ONA group is again converted into OH, and here there is COOH group is introduced at the ortho position of OH group, and this compound is called salicylic acid. तो इसके रीमन-टीमन रिएक्शन में पहले हम इंट्रोड्यूस करें अल्डिहाइड ग्रुप एट द ऑर्थो पोजिशन ऑफ फेनॉल, और सेम अगर हम CCl4 का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर COOH ग्रुप ये इंट्रोड्यूस होता है ऑर्थो पोजिशन ऑफ फेनॉल या फेनॉल के ऑर्थो पोजिशन पर. द नेक्स्ट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कोल्बीज रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन वी इंट्रोड्यूस द अल्डिहाइड ग्रुप. यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एसिड ग्रुप, दैट इज COOH ग्रुप टू ऑर्थो पोजिशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल के ऑर्थो पोजिशन. सो दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ सोडियम फेनॉक्साइड. सब में पहले हम यहाँ पर लेंगे सोडियम फेनॉक्साइड. दिस सोडियम फेनॉक्साइड इज रिएक्ट विथ CO2. यहाँ पर ये रिएक्ट होता है CO2 के साथ. सो हियर वी गेट OH, COONA. This compound is called सोडियम सैलिसिलेट. यहाँ पर तैयार होता है सोडियम सैलिसिलेट. इट कंटिन्यू विथ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. देन हियर द सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय H, so it gives COOH, that is called salicylic acid. So here we get salicylic acid, means COOH group is introduced at the ortho position of phenol. It is also very important reaction. In this reaction we introduce acidic group COOH group in the benzene ring at the ortho position of OH group. It is called Kolbe's reaction. The next reaction is oxidation of phenol. Oxidation is occurs by using oxidizing agent like CrO3 और Na2Cr2O7/H2SO4. देखो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन करना है फेनॉल का, या तो हम यूज़ कर सकते हैं CrO3 और वी यूज़ Na2Cr2O7/H2SO4. Here the product is, here we introduce oxygen, here also oxygen. So here there is double bond, here there is double bond, and it is called पैराबेंजोक्विनोन. यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो है पैराबेंजोक्विनोन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पैराबेंजोक्विनोन. हियर वी इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द फेनॉल. सो इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल. द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फेनॉल इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. यहाँ पर हम फेनॉल में ऐड करेंगे हाइड्रोजन. Therefore, it is called hydrogenation. In phenol, there are 3 double bonds. So here we take 3 molecules of hydrogen gas in presence of Ni. All this double bond is converted into single bond due to the hydrogenation, and here we get cyclohexanol. यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो
साइक्लोहेक्सेन है और उसको OH ग्रुप अटैच है, सो द नेम इज साइक्लोहेक्सेनॉल. इट इज कॉल्ड catalytic hydrogenation. Here phenol is react with hydrogen gas in presence of Na. It gives cyclohexanol. And the last reaction of phenol is the reduction of phenol. The reduction means the removal of oxygen by heating with zinc metal. यहाँ पर हम ऑक्सीजन को रिमूव करने वाले हैं. फेनॉल का जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करने वाले हैं बाय हीटिंग विथ जिंक मेटल. और उसके लिए हम यहाँ पर इसको हीट करने वाले हैं जिंक मेटल के साथ. सो व्हेन फेनॉल इज रिएक्ट विथ जिंक मेटल, हियर इट रिमूव द ऑक्सीजन ऑफ द फेनॉल एंड इट कन्वर्टेड फेनॉल इनटू बेंजीन. यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन एंड द बाय प्रोडक्ट इज ZnO. So in this way we see the different reactions of phenol. Some reactions are electrophilic substitution reaction, जिसमें हम पढ़े halogenation. Second one is nitration. Then the third one is sulfonation. The fourth one is Riemann-Tiemann reaction, and the fifth is Kolbe's reaction. After that we see the oxidation, then we see the catalytic hydrogenation, and the last is the reduction of phenol. So here we completing the important part, that is the reactions or chemical properties of phenol.